Hello everyone. Today we are going to talk about the heart sounds. हम सब ने दो heart sounds तो सुनी है, right? That is lub and dub. That is your sound 1 and the sound 2. But अगर मैं आप लोगों को बोलूं S3 and S4 भी होती है, yes, 4 heart sounds are there. Let's understand them. If I talk about the S1 and S2, they are normally audible. Okay? ये आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं S1 and S2 को mostly all the time. But if I talk about the S3, it can be normal or abnormal. Normal की बात करें तो it is mostly heard during rapid ventricular filling, okay, mostly in athletes or in children. But if I talk about the S4, it is mostly pathological, that is abnormal. And heart sounds are heard only during the closure of the valves. Yes, S1 and S2 should be heard normally during the closure of the valves. अगर opening में sound आ रहा है तो it means there is some defect in the heart. Let's discuss further more about S1 and S2. If I talk about the S1, it is called as lub and S2 is called as dub. लब कब सुनाई देती है? At the closure of your AV valves, that is arterioventricular valves, that is your tricuspid and bicuspid valves, or I can see at the beginning of ventricular systole, means जब ventricular contraction start होगा, जब हमें क्या सुनाई देगी? Our first heart sound, that is S1. If I talk about the second heart sound, that is dub, or you can say dub, it's one of the same thing. Okay, if I talk about it, it is heard at the beginning of ventricular diastole. मतलब जब हमारे ventricles relax कर रहे हैं, जब हमारे ventricles क्या कर रहे हैं? Relax कर रहे हैं, जब हमें क्या सुनाई देगी? Dub. That is your second heart sound, or I can say at the closure of semilunar valve. Semilunar valves means pulmonary valve or aortic valve. So here is some question for you. Let's discuss those questions. If I ask you what is the time interval between lub and dub, the answer is simple, that is 0.3 seconds. Just give me a second, I'll explain you in the next slide. And if I ask you this question, time interval between dub and lub, yes, now it's different. First lub and dub, now it is dub and lub. Here the answer is different, 0.5 सेकेंड पे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो सर्कल्स. दिस रिप्रेजेंट कार्डियक साइकिल. यस, इफ यू लुक हियर, ये जो सर्कल है कितने सेकंड्स का है? 0.8 सेकंड. देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेकंड. 0.8 सेकंड का ये सर्कल है. ओके, इफ यू लुक हियर, द आउटर सर्कल विल रिप्रेजेंट आर, आप देखिए जस्ट, या लेट्स बिगिन. अगर मैं देखूं, ये जो आउटर सर्कल है ये क्या दिखा रहा है? एट्रिया. ओके, दिस इज जो भी एक्टिविटी हो रही है एट्रिया में, मींस योर अपर चैम्बर्स में, वो आउटर सर्कल दिखाएगा. और इनर सर्कल क्या दिखाएगा? जो वेंट्रिकल्स में एक्टिविटी हो रही है, मतलब वेंट्रिकल में सिस्टोल कितनी देर का हो रहा है और डायस्टोल कितनी देर का हो रहा है. ओके, सो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट सिस्टोल here and here. So this is our ventricular systole और ये क्या हो गया हमारा? atrial systole. सिंपल. अब क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखते हैं. देखिए क्या पूछा है? टाइम इंटरवल बिटवीन लब एंड डब. ओके, अगर मैं लब की बात करूं, हमने क्या पढ़ा था? लब स्टार्ट्स और लब इज हर्ड एट द टाइम ऑफ और एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि ये पूरा शेडेड पोर्शन क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लब और डब में कितना टाइम इंटरवल है. ओके, लब और डब में बात करूं मैं, तो आप देखिए यहां पे शुरू हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, क्योंकि लब इज हर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब वही मैं डब की बात करूं, डब कब सुनाई देती है? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. मींस जहां पे सिस्टोल खत्म हो रहा है, राइट? जब सिस्टोल खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा, जब ही रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा. मतलब रिलैक्सेशन यहां से स्टार्ट हो गया, पूरा रिलैक्सेशन है. तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज योर वेंट्रिकुलर, दिस इज योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल. इतना समझ आया? ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये क्या हो गया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल. यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मतलब सिस्टोल खत्म हुआ है. तो क्या हो गया? This is lub and this is dub. How many seconds? 0.3 seconds. Count it. See, 0.1, 0.2, 0.3 seconds. Understood? See, 0.1, we have 0.2 here and the 0.3
seconds. I hope this is clear. Okay. So the next question is time interval between dub and lub. It's very easy to understand now. देखो मैंने क्या बोला अभी आपको. Let me erase this. ये देखो. अब आप समझो. Let's understand this. अब मैंने क्या बोला. डब और लब के बीच कितना है. डब कब सुनाई देती है? एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहां से स्टार्ट हो रहा है. ओके, नाउ आई विल गो लाइक दिस. यस, मैंने लब डब के लिए ऐसे गई थी और डब लब के लिए हम कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे. अंडरस्टूड? तो देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 second. Yes, the time interval between dub and lub is 0.5 seconds. So here you can see again the same question. So time interval between lub and dub is 0.3 seconds and the time interval between dub and lub is 0.5 seconds. I hope these two questions are very clear to you all now. Thank you.